today I make something different kind of food. My recipe name is bunny chow. Bunny chow food coming from South Africa. South African people mostly like this kind of food. So if you like this video, please watch till end. Without further delay, let's start. Olive oil, chop onion, ginger garlic paste, spices, chicken, salt, turmeric powder, red chili powder, coriander powder, cumin powder, water, carrot, potato, इसको थोड़ा अच्छे से पका लीजिएगा क्योंकि अभी कैरोट आलू है पोटैटो है, इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसको अच्छे से सूटे करने पड़ता है। सूटे करके मिनिमम 10-15 मिनट इसको अच्छा से स्लो फ्लेम में पकाइए। सो गाइस, यू नीड टू कुक स्लो फ्लेम 10 to 15 मिनट। इसको बंद कर दीजिए, थोड़ा सा हल्का फ्लेम में इसको पकने दीजिए। सो गाइस, फाइनली आफ्टर 10 minutes this is done. You look so nice, you know, superb color. Actually this is originally from South African recipe. This is originally from South African dish bunny chow. So now we need to take out.
coriander. So now we're going to put some mixed leaf. Cherry tomato. Dutch cucumber. Red radish. And carrot. This is bunny chow, South African food. So आप अपना घर में भी ट्राई कर सकते हो. You can try at your home also. This is very tasty food. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में. बहुत easy to cook. So don't forget to like, subscribe and comment. फिर मिलेंगे next video में. Next video also my related to food. So bye bye.